25 and 35 फीट हाउस प्लान डिजाइन। तो स्टार्ट करना है हमें डिजाइन। पहले हमें यहाँ पर डोर क्रिएट करना है। स्टेयर अप, डोर एंड उसके बाद डी डोर एंड नेक्स्ट डोर एंड गेट। नेक्स्ट wall 125 mm partition wall and internal and outer partition wall। सेम मेजरमेंट इसके अंदर हमने ड्रॉ किया है वॉल के अंदर, और कुछ विंडो इसके अंदर हमने रेडी किया है। तो विंडो हमने यहाँ पर जस्ट एक प्रोपोजल ड्राइंग के अंदर ऐड किया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कितना डिस्टेंस पर ऐड करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट इधर यहाँ पर बरामदा रहेगा फ्रंट साइड पर ऐसा। नेक्स्ट इधर रेलिंग, यहाँ पर हम ऐसे कलर के साथ येलो कलर ऐसे करके यहाँ पर रेलिंग और वेंटिलेटर विंडो इसको हम सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इधर इस साइड पर ऐसे हम सेट कर देंगे। उसके बाद इसको क्या करना है, हमें डिटेल्स भरना है। तो डिटेल्स भरने से पहले यहाँ पर और भी कुछ काम यहाँ पर बाकी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हम यहाँ पर स्टेयर के लिए यहाँ पर हम और एक ऐड करेंगे। तो स्टेयर के लिए हमें 4 चाहिए यहाँ पर कलम, तो हमने यहाँ पर ऐसे इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर जो करना है इसका डिटेल्स भरना है। डिटेल्स क्या रहेगा देखिए, 25 फीट 0 इंच बेडरूम। नेक्स्ट बेडरूम bath plus WYC and next bedroom, kitchen, veranda, drawing, stair। 25 by 35 feet 0 inch ventilator, 5 feet 0 inch and 7 feet 8 inch। Next window
बेडरूम 11 फीट 8 इंच 12 फीट 10 इंच। एंड नेक्स्ट यहाँ पर 12 फीट 10 इंच। 9 फीट 11 इंच एंड 7 फीट 8 इंच यहाँ पर। तो विंडो हम यहाँ पर सेट करेंगे। डोर और विंडो का जो वेंटिलेटर है यहाँ पर हम रेडी करके रखेंगे, बाकी डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप इसको इस टाइप से इसको ऐड करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर भी विंडो 11 फीट 8 इंच एंड 12 फीट 10 इंच। रूम 1 2 and 3 feet 900 wide stair, यहाँ पर 8 फीट 10 इंच से रहेगा। डब्ल्यू विंडो, यहाँ पर विंडो 5 फीट 5 इंच का वाइड वरांदा, 12 फीट 1 इंच वाइड एंड किचन 7 फीट 6 इंच एंड 7 फीट 0 इंच। ओके, तो आउटसाइड वॉल 5 इंच वॉल एंड इनसाइड में 5 इंच वॉल, कलम 10 बाई 12 इंच का कलम और 25 इंटू 35 875 स्क्वायर फीट, कॉस्टिंग 14 लाख प्लस यहाँ पर इसका कॉस्टिंग आएगा। इधर से फ्रंट साइड एंट्री गेट आपको इधर से मिल जाएगा। 450 इंच 8 यहाँ पर एंट्री